हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फ्लो चार्ट ऑफ अ चैप्टर कि हम इस चैप्टर में क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है वो चैप्टर का नेम है। जो फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है केमिकल इक्वेशंस, जिसका एक सब टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के जो केमिकल इक्वेशंस हम बनाते हैं उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, evolution of gas and the formation of precipitate. Precipitate को हम short form में PPT भी बोलते हैं. It is not that of computer. It is related to our chemistry, like PPT means precipitate. Change in color की जो characteristics है उसमें एक सब टॉपिक है endothermic reactions and exothermic reactions. Next topic is types of chemical reactions, in which we have combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, then oxidation reaction, reduction reaction. The last but not the least is redox reaction. The decomposition reaction is further divided into three parts: the thermal, electrolytic, and photochemical. Displacement also divided into two: the single reaction and the double displacement reaction. So first topic हम start करते हैं जो है chemical reaction. अब chemical reaction होता क्या है? A process in which one or more substances react to form new substances with new chemical identity and property. केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें आप किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें आप रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्म में होता है जिसकी खुद की एक न्यू आइडेंटिटी होती है और खुद की एक नई प्रॉपर्टी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिम्बॉलिक मीन्स वी डोंट यूज़ द फुल स्पेलिंग्स, हम पूरा स्पेलिंग्स नहीं यूज़ करेंगे, वी जस्ट यूज़ द सिम्बल्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए हम जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं उससे हमारे क्या बनता है? केमिकल इक्वेशन बन जाता है। सिम्बल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स and the products are used for the same. Same means for making a chemical equation. Chemical equations बनाने के लिए हमें एक साइड में reactants यूज़ होते हैं, एक साइड में हमारे पास जो बनता है न्यू सब्सटेंस उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। So let us see the example here. We have CH4. CH4 means methane. Combine it with oxygen, O2, which is a gas, and methane is also a gas here. These are the reactants. Even we can say this as a left hand side, but these two are reactants. We are reacting the methane gas with the oxygen gas. Then this is a line which means that the further are the products. आप हीट के साथ में मीथेन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवा रहे हैं. दिस सिंपल रिप्रेजेंट्स हीट. CO2 means the carbon dioxide and H2O is water. When methane gas and oxygen gas, which are the reactants, react with each other with the help of heat, we get two products. The one is carbon dioxide and the other is water. So this whole, the methane plus oxygen with the help of heat becomes carbon dioxide and water. This whole is called the word equation or a chemical equation. Chemical equation is the symbolic representation and word equation is the full form of the symbolic representation. Now let us come to the small topics. The physical state of a compound. Here S symbolize the solid, gas symbolize
G. L symbolizes the liquid and AQ symbolizes the aqueous. These are the physical states of a compound, like we have written here. Methane with G means methane is a gas. Oxygen is also with a G, is also in a form of a gas. Now, I have told you before, this triangle is that the symbol which is reaction is taking place with the help of a heat. This triangle is for heat. Now, coming on to the next part is balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? Now, हमें पता चल गया है कि chemical equation क्या होता है. Coming on to next is balanced chemical equation क्या होता है. A chemical equation in which the number of atoms of each element on reactant side is equal to that of the product side. Main thing is that the number of atoms. Now we are saying that there should be equal number of atoms on the reactant sides and on the product side. We should have the same number of atoms of each element to be same on the reactant and on the product side. Balancing of chemical equation is done to follow the law of conservation of mass. We have studied before what is law of conservation of mass means. Mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन जब होता है उस टाइम पे हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम क्यों करते हैं? इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. नाउ वी विल सी द मेथड कि आप कैसे इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. द मेथड इज यूज फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. ये हमने मैथ में पहले सुना है कि हिट और ट्रायल मेथड भी होता है. इसको हम अपनी जो नॉर्मल या लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसको जुगाड़ बोल देते हैं एक तरीके से. As we make trials to balance the equations by using the smallest whole number coefficients. अब सबको पता होगा कि whole numbers क्या होते हैं. There is no need to tell anyone. बट हम इसके अंदर smallest whole numbers को यूज़ करते हैं. हम ऐसा नहीं करेंगे कि we will take the 22 और 24 और like 99 और 98. जो smallest whole numbers होते हैं उन्हें ही हम coefficient के लिए यूज़ करते हैं. So let us see it step by step. If we are taking a chemical equation like Fe plus H2O give us Fe3O4 plus H2. So first of all we will check the number of atoms of each elements on the reactants and the product sides of the equation. ये क्या है? हमारी reactant side है और ये क्या है? हमारी product side है. तो हम पहले चेक करते हैं कि कितने atoms किस तरफ कितने कितने हैं. Like we are taking the elements Fe, H and O because 3 ही elements है हमारे पास में पूरे chemical equation में. Number of atoms in reactant sides कितने हैं? 1 for Fe, 2 for H and 1 for O. Now coming on to the product side, 3 for Fe, 4 for O and H have 2. So first of all we will balance oxygen because maximum difference is in the oxygen value. हम सबसे पहले ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे बिकॉज सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है हमारे पास एटम्स का वो ऑक्सीजन में है. बिकॉज प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 4 है और रिएक्टेंट साइड्स में हमारे पास में 1 है. नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी मल्टीप्लाई H2O मॉलिक्यूल्स बाय 4. Fe plus 4 whole H2O give us Fe3O4 plus H2. ये जो नीचे लिखा जाता है 4, 3 हम इन्हें बैलेंस करते हैं. Now what we have to notice is that H2O is a complete compound. H2O एक complete compound बनाता है which means water. H2O हमें water देता है. So we multiply it whole with 4. हम जो सारा का सारा हमारे पास ये कंपाउंड है H2O वाला हम इसको कम्प्लीटली 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
ना कि हम इसको ऐसे लिख देंगे कि H तो 2 रह गया और 4 जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो गया। हम इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट हमने इस पूरे को एक ब्रैकेट में रखा हुआ है। 4 2 ज़ा 8, दिस मीन्स 8 फॉर H एंड 4 फॉर O। वंस अगेन थर्ड स्टेप पे आते हैं हम। चेक द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, Fe for 1, 4 for 8, H for 8 and O for 4, 3 for Fe, 2 for H and 4 for O. Now we have balanced the oxygen element, 4 on both sides. Now we are having a maximum difference in H, because here it is 8 and here it is 2. Now step 4 is balancing hydrogen atom by multiplying H2 with 4. This means 4H2 becomes the 8 atoms. Fe plus 4 whole H2O gives us Fe3O4 plus 4 whole H2. Now we are having the elements like Fe, H and O. On left hand side we have 1 for Fe, 8 for H, 4 for O, and on the right hand side we have 3 for Fe, 4 for O, and 4 2s are 8. 8 for H. Now we have balanced the H and O. Both are balanced. Now coming on to the last step, balancing Fe by multiplying 3 on LHS. 3 Fe plus 4 H2O gives us Fe3O4 plus 4 H2. Now we can see that we have balanced all the elements, Fe, H and O. 3 Fe on the left hand side, 3 Fe on the right hand side. 2 4s are 8. 8H for the left hand side and 8H for the right hand side. Now 4 1s are 4. 4 for O on the left hand side also and 4 for O on the right hand side. So we have balanced the equation. जो आपने पीछे सीखा वो स्टेप बाय स्टेप था, ताकि आपको पूरा अच्छे से जो मेथड है वो समझ आ जाए. Now let us do it very fast. Here we have a chemical equation which is unbalanced. Now let us balance it. FeSO4 gives us Fe2O3 SO2 plus SO3. Here we are having one atom of Fe here, one atom of S here, and 4 of oxygen atoms here. On the right hand side we have 2 Fe, 2 S. Here 1 S here and 1 S here. 1 plus 1 we have 2. 3 atoms of oxygen here, 2 here and 3 here. So we will plus them. 3 plus 3 6, 2 is 8. We are having 8 atoms of oxygen on the right hand side. So what we have to do to balance the equation? First of all, we are seeing like 2 Fe are here. We will multiply it whole by 2. Now we see, is it balanced or not? 2 1s are 2. So 2 Fe here on the left hand side, 2 Fe here on the right hand side. 2 1s are 2. 2 for S on the left hand side and 1 means 2 on the right hand side. Next, 2 4s are 8. 8 on the left hand side. And let us see on the right hand side, 3 plus 3 plus 2 means 8. So the chemical equation is balanced. Here are some questions which you can try by your own. If you have any problem, you can comment me in the comment section. Subscribe the channel, press the bell icon and click on the all button so you can get all the notifications of the latest videos. Thank you.